Good evening to all the students out there. So last day we had a discussion on the introduction to the preamble, जहाँ पे हमने समझा history of preamble क्या थी, and how did it come into it was enacted, and how did it come into action. Everything we have discussed. तो आज हम study करेंगे उस preamble का interpretation. Okay, so just let's start it. Okay, so all of you are aware of the fact that how our preamble reads. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay, so why did I read this to you? I just want to give you an idea that आप देखो हमारा preamble कैसे start होता है we start it with we and we end it with give to ourselves. ठीक है, तो we start with our mission we and end it with give to ourselves. So we the people of India give to ourselves. What does this mean? That we the people, we generate authority. Okay, we the people generate authority. Okay, people generate authority. Okay, and have to use that authority for whom? And have to use that authority for our own welfareism. ठीक है, इसका मतलब समझते हैं. इसका मतलब ये है that the Constitution of India gets authority. The Constitution of India gets authority from whom? From the people. इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारा प्रियम्बल है इसका ये मतलब है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी दे रहे हैं कि हमारे वेलफेयर के लिए वो काम करे. ठीक है, हम खुद ये उनको राइट दे रहे हैं. ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन करेक्ट ये है. ठीक है, अगर आप इसको फिर से रीड करोगे यू वुड गेट इट दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड देन एंडिंग इट विद गिव टू आवरसेल्व्स. ठीक है, तो मतलब ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से आ रही है? हम लोगों से आ रही है. ठीक है, वी आर गिविंग देम दैट अथॉरिटी. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी मिलती है पीपल से. ठीक है, अब हम नीचे थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर जो किसी भी स्टेट का होता है, ठीक है, उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? गवर्नर को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? पीपल से. So people gives authority to the constitution gives authority to the governor gives authority to whom? Governor gives authority to whom? To the CM. ठीक है, CM से अथॉरिटी कौन लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो अब आप देखोगे जो ये पूरा सेटअप है, ये एग्जाम्पल मैंने गवर्नर का इसलिए लिया, आप प्रेसिडेंट बोल सकते हो या फिर प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो कुछ. तो जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन. अकॉर्डिंग टू अस कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग पास टू द गवर्नर, जो उसको फिर सब्सिक्वेंटली देते हैं सीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. लेकिन अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है? अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल. ठीक है, तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया have sole authority
we the people of India have sole authority over all of Indian administration, polity and governance. ठीक है? So this preamble correctly interpreted is that we are the source of authority and the constitution gets authority from the people, right? Now this is all about the source of authority, right? तो अब जब ये source of authority की हम बात कर रहे हैं तो just we can put it down that source of authority is people of India. ये हमने ऊपर देख लिया अच्छे से. That means India observes doctrine of public sovereignty. Doctrine of public sovereignty का मतलब है कि हमारे यहाँ what we say that जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि people of India are the topmost authority and constitution gets authority from them, इसीलिए इसको हमने sum up करके कहा है public sovereignty. मतलब लोग सबसे ऊपर है, public is above all, right? But you just imagine a country of 135 crores population, तो उसमें हर एक आदमी के पास तो अथॉरिटी हो नहीं सकती है, ठीक है, कि हर आदमी अथॉरिटी देगा. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो क्या होता है, उसके लिए वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स. इसीलिए हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, चोजन बाय अस, हु रिप्रेजेंट अस इन द पार्लियामेंट. And these people representatives are supreme, right? Because they are chosen by one and us, okay? And they are enjoying this authority on behalf of us, okay? They are prominent and they can take decisions, okay? Whenever any law is required, they are competent to make laws. Okay? They are even competent to make laws and they are even competent to unmake that laws, okay? To even break those laws, right? तो ये power किसने दिया है इन representatives को? Again the people, okay? So this is the doctrine of public sovereignty where people are supreme, people are prime, and on their behalf representatives are doing their job because the ultimate authority lies with the people, okay? And when you have such people's representative, what is expected? The people expect from the representatives, they expect from public bureaucracy, okay? Because at the end of the day, the most important is welfareism. Welfareism is most important, right? And that is why we are giving them the authority so that they take, they make decisions on our behalf, okay? This is your doctrine of public sovereignty, okay? And whenever doctrine of public sovereignty is observed, when this doctrine of public sovereignty is observed, at that time the role of parliament and legislature is important. Why it is important whenever doctrine of public sovereignty is observed? Because it means that you have people's representatives. अब people representative कहाँ पे होंगे? पार्लियामेंट में होंगे, लेजिस्लेचर में होंगे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में होंगे. सो इसलिए जहां भी डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक सॉवरेनिटी प्रिवेल करेगी वहां पे रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, बिकॉज दैट इज वाई whenever जो bureaucrats है, their job is very important. Why? Because people's expectations are there. People expect them to do something for their betterment, okay? Because
you are using the authority for the same person who has given you the authority. Okay, you are using the authority for the same person who has given you the rule or the authority. Okay, fine. So this is all about the source of authority, right? So the first point which we have discussed is the source of authority. Okay, so we can just club it all together this way. Preamble source of authority, we the people give it to ourselves. Secondly, basis of public governance, ये हम अभी स्टडी करेंगे कि कैसे ये बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस है. एंड लास्टली क्या हो सकता है बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. ठीक है. सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी हैव स्टडीड. बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस कैसे, हम इससे क्या सीखते हैं. ठीक है. इट गिव्स, प्रियम्बल गिव्स द बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस. राइट. कैसे? It suggests the representatives, the public administrators, that how they have to perform their duties on the basis of which principles of public governance. It suggests them. ठीक है. वो उन्हें बता दिया आपको किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करनी है. What are the principles or the basis which you have to adopt. Okay. और यहाँ पे mostly we have 5 bases. What are those? उसको हम लिख लेते हैं. which we'll be discussing. Sovereign, socialist, secular, democratic, and your republic. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट क्या है जो हमने देखा है. वंस वी कैन रीड इट. हैविंग solemnly resolved to constitute India sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये बेसिस है पब्लिक गवर्नेंस की. हाउ द पब्लिक गवर्नेंस हैज टू बी कैरिड आउट. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योर इट ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. ठीक है. तो प्रियम्बल में जो हमारे 3 जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस है, एंड ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड योर फ्रेटर्निटी. ठीक है. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रियम्बल विच वी कैन डू. ओके. तो ये हमने इंटरप्रिटेशन कर ली. नाउ आवर जॉब वुड बी दैट ये जो बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस है इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे. ये जो बेसिस है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, justice, equality, liberty, fraternity, right? So now we would be studying what is sovereignty. The first basis. What is sovereignty? Sovereignty, we all know, sovereignty is independence, right? Independence in all your affairs. Okay. As we have seen that the supreme authority lies with the people of our country
ठीक है, बिकॉज वी गिव टू आवर सेल्फ राइट. सो सॉवरेनिटी lies in the office of people of India. Sovereignty lies in the office of people of India. Okay. Sovereignty means independence in all its affairs. आप फ्री हो. It also means no dominion status. It also means no dominion status. No dominion status का मतलब क्या है? It means what happened. थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं. ठीक है. In August 1947, ठीक है, Britishers gave us dominion status. इसका मतलब हो क्या? डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है कि they would be handling what? They would be handling the foreign and defense matters. The foreign and defense matters. ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस आप ले लो, ठीक है, लेकिन ये मैटर अब भी हम ही हैंडल करेंगे. This was the meaning of dominion status. ठीक है. They said that you will be granted independence provided that these matters you can discuss other matters, but foreign and defense matters, it would be handled by us. Rest of the matter you take your decisions. Okay, but this was not acceptable to us. This was not acceptable to the freedom fighters. Okay, they were not in favor of DS. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमें DS नहीं चाहिए. What we want is complete sovereignty. We want complete sovereignty. जैसे मैंने पहले बताया, sovereignty means independence in all your affairs, no dominion status. लेकिन डोमिनियन स्टेटस क्या है कि फॉरेन और डिफेंस मैटर्स उनके हाथ में रहेंगे. बट हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कंप्लीट सॉवरेनिटी. नो, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग. वी वांट कंप्लीट सॉवरेनिटी. और कंप्लीट सॉवरेनिटी मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इन अदर वर्ड्स, संपूर्ण स्वराज. ओके, दिस वॉज आवर डिमांड. ठीक है, कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए. ठीक है, वॉट वी वॉन्ट इज दैट वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज ऑल्सो. ठीक है, डिफेंस एंड फॉरेन क्या है? स्ट्रैटेजिक अथॉरिटीज है. ठीक है, एंड अगर वो हमें मिलेगी तभी हम अपने आप को कंप्लीट सॉवरेन बोलेंगे. ठीक है, अगर हमारे पास डिफेंस और फॉरेन नहीं है तो वी कैन नॉट कॉल आवर सेल्व्स अ सॉवरेन स्टेट. ओके, so what is sovereignty according to us? What is sovereignty according to us? Sovereignty according to us is independence of all defense and foreign policies. ठीक है, which we are now. तो मतलब हमें सारे डिसीजंस में हमारी इंडिपेंडेंस चाहिए. हमें किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस मतलब किसी भी तरह की इंटरफियरेंस नहीं चाहिए. नो इंटरफियरेंस फ्रॉम एनी स्टेट. नो इंटरफियरेंस फ्रॉम एनी अदर कंट्री. ठीक है, we are enough to take our decisions. We are competent enough. Okay, so this is sovereignty according to us. This is what we wanted. Okay, तो sovereignty जो preamble में है हमारी, that is complete independence to take decisions on all your matters, be it your foreign affairs, be it your defense affairs, be it your normal day to day affairs. सब में हमें independence चाहिए.
तो इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से जस्टिफाइड किया है? हाउ हैव वी जस्टिफाइड दिस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? लेट्स हैव अ लुक हाउ इट इज जस्टिफाइड. How sovereignty is justified in our constitution. Number 1, Article 51. What does it say? Independence of foreign policies. That means mostly, promotion and maintenance of international peace, security, respect for treaties, international laws, and settlement of international disputes through arbitration. Okay, so all of this, to sum up, independence of foreign policies. Okay, that we can settle our own disputes well. And another, Article 51A, which is your fundamental duty. Why? Because sovereignty is the basis. Sovereignty is the basis upon which every citizen of India is competent to accept it as its fundamental duty to protect your country, to defend your sovereignty. And so it is binding on every citizen. जो fundamental duty है, it is binding on every citizen. Binding on every citizen. ठीक है? Why? Why? Because we have to defend our sovereignty. Because we have to defend our sovereignty. ठीक है? We have to protect our country and to defend our sovereignty. This Article 51A, this fundamental duty is binding on us. Okay, so by these two articles we can justify that sovereignty is our basis, is a basis of our public governance. Okay, and how do we practice it, right? And real sovereignty in real sense is not dominion status, but to be free in all our internal and external matters. Okay, and we are in a position to do that, and it can only be possible if the people of India accepts that and accept it as their fundamental duty to defend their own sovereignty. Okay, so with this we can conclude that the interpretation, to sum up, and yes, we have completed one basis of public governance, sovereignty. Our next discussion would be socialist, secular, democratic republic. This would also be done in following up classes or lectures. So for today it's goodbye from my side. See you soon, guys.